Hi guys and girls, this is Versace and this is story time. तो ये बात है 2021 की 2021 when I was a kid. ऐसी ऑडियंस में बैठी हुई थी और Radha Sama was calling a few people on the stage, fan moment and everything. So he called me too और मैं वो करके चली गई. वहाँ पे जाके स्टेज पे मैंने अपनी सुनाई पोएट्री. लेखक है हम. 2 नंबर नंगे, वो जो फारिश शफी अपना कहता है ना, अब शायर कब से बन गए, अब सारे लगते नंगे, हम वो वाले हैं. फिर मैं घर आ गई. घर बैठी हुई थी, मैं फोन देख रही थी, स्क्रोलिंग अप डाउन, वॉचिंग पोर्न्स, वॉचिंग वीडियोस, वॉचिंग कॉमेडी. और एकदम से एक नोटिफिकेशन आई करके, एंड रजा समो वाज वाचिंग माय स्टोरी एंड ही टेक्स्टेड मी ऑन इंस्टाग्राम. उन दिनों में रजा समो एक अजीब सा कैरेक्टर प्ले कर रहे थे और मुझे ऐसा लगता है कि मैं रजा समो से नहीं, उस कैरेक्टर से मिली थी. That was nice though. My dopamine level from here went to this. I was like, fuck, damn, man. What? I was so happy, man. That dopamine hit was even better than ecstasy. घर आने के 4 दिन तक मैं बहुत खुश थी. I was very happy. उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसी तरह से मूरू के शो में भी जाऊंगी और फिर मैं मूरू से भी मिलूंगी, इसी तरह मैं गंजी स्वैग से भी मिलूंगी, इसी तरह मैं एक दिन रोमैसा से भी मिलूंगी, इसी तरह मैं एक दिन जेनिस टेसा से भी मिलूंगी, इसी तरह एक दिन मैं दयान से भी मिलूंगी. और मैं दयान से मिली थी. थैंक्स बाय द वे बिकॉज यू गेव बर्थ टू अनदर कैरेक्टर एंड दैट इज अरीबा. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट रजा समो एंड आई became friends. A little more than friends. I think itni information kafi hai. Because now you're married, congratulations. Your wife is a very good choice of yours. I don't know yet. In the back of my head, I always wanted to be Raza Samo. I never wanted to be like him. I wanted to be him actually. And I figured out that like, damn, I can't actually. This guy is like, he's full of crap. He's just, I'm sorry for saying that, but that's an honest review. You're literally full of, क्या कहते हैं उसको, scrap. Yeah. I'm not you. I will not abuse. Yeah. मैंने गालियाँ देनी छोड़ दी थी anyways. Throughout the time when I was with this being, I felt very bullied through his content. And at first, I thought that he's saying these things without taking my name. And I thought that maybe he's not saying this to me, he's saying this to a lot of other people. And I was just fine with it. यहाँ तक तो ठीक था, it's fine. And through my content, I was quite shady too. And obviously, it's tit for tat. And later on, when I saw one of his interviews on Muru's page, यहाँ पर I was quite sure. I was like, what the fuck, bro? I think that he is actually saying that to me. And in this clip, what he says is that there was a girl who came into my show and she said this. Basically, what I think is that I went to one of his shows again and maybe I think I ruined the show. That was the reason. Well, the purpose was not ruining at all. The purpose was just making other people laugh. That was the whole point. That was nothing more than that, to be very honest. And if you could have asked me for the consent for the sake of only comedy or maybe fun, we could have posted it, but that's fine, not a big deal. यहाँ तक तो ठीक था. But then one day, I met one of your this. फिर मैं मिली आपकी इस छोटी लुली से. I'm sorry, ये आपके राजा जी. Choti Luli. I met him. I thought we'll make friends and I'll learn editing from this person. And I met him and then he shake his hands with me and he literally pressed it like, वो handshake नहीं था bro. दोस्तों से ऐसे हाथ मिलाते हैं. Like literally that was not handshake. For a second like I felt like damn bro. I never experienced that handshake in my entire life. As you know, वर्षा दीदी भी आपकी वर्षा दीदी हैं. मैंने फिर इसके साथ की दोस्ती अच्छी खासी. And then I took him to play Taken with me. And I beat the ass up of that
कैरेक्टर ही वाज प्लेइंग विद. बाकी गेम्स असाइड, लाइक गेम्स में हर कैरेक्टर के साथ जब आप खेल रहे होते हैं ना, यू एक्चुअली इमेजिन कि वो कैरेक्टर आप ही हो, और वो जब उसको लगती है ना, वो आपको भी लगती होती है साथ साथ. सो out of rage I actually did that and I'm not sorry of that, motherfucker, you deserve it. In fact मैंने मूरू को मैसेज भी किया था. I really wanted to meet him, लेकिन बैड लक मैं उससे पहले रज़ा समो से मिल गई और सब इन्फ्लुएंसर्स और सब लोगों के बारे में मेरा पर्सपेक्टिव एक्चुअली चेंज हो चुका था. By the way, I talk to Janice Tessa as well sometimes. I really love her. Like everybody who see him in my account, they would come to me and they would ask me कि बाजी रज़ा समो से मिला दें, रज़ा समो से मिला दें. मैं खुद ही जाके मिल लो. Like मैंने जब मिलना था मैं खुद गई थी ना. You guys can bring your ticket and just go and just meet him. ऑडियंस में बैठे हो तो उसको बुलाओ, उसको बोलो मुझको स्टेज पे बुलाओ, वो बुला लेगा, बात खत्म. मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैंने थोड़ी टिकट लगा के बैठी है, मैं थोड़ी टिकट वाला हूँ. I just started feeling that people are just here because of this particular person in my account. But it's okay. So I let him go. You go, you find him, you meet him, do whatever you want to. I am not a bridge in between that. Bye. इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं. आई होप आपको मेरी दुखी दास्तान पसंद आई होगी. अगर नहीं भी आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो. Because I want to get out of call center. I don't want to work here. I want to work here, my boss.